the Hindu Awareness Yatra 2015, significant members of VHP Bharat traveled to North America. A meeting was arranged by VHP North America in Boston at Shri Dwarkmai Shirdi Sai Baba Temple. An evening orchestrated with bhajans and talks by senior members also included honoring senior community members. The evening began with Bhavgeet led by Smt Jaya Asthana, followed by the welcome address by Shri Harish Dang. Shri Ashok Ji, the patron of VHP Bharat, and Dr. Mahesh Mehta, the founding president of VHP of America, did the deep prajwalan. Bhajans during the evening were sung by Sachi, Badola, and Amritha Pai. Dr. Abhaya Ashthana, the national president of VHP of America, presented content about the organization before handing the stage to the team traveling from Bharat. Shri Champat Rai Bansal is the Secretary General VHP. Shri Prashant Hartalkar is Central Secretary of VHP of Bharat. Shri Ashok Singhal was introduced by Smt Ranjani Saigal. Shri Ashok Singhal is the past working president and founding patron of VHP. He spoke on Hindu identity, Dharma and Anushasan. He also blessed the elders of the community, Ratan Lal and Vimla Bhatia, Tej and Prem Tandon, Puran and Kamlesh Tang, and Prabhu and Drupadi Rati before Shri Tej Tandon delivered the vote of thanks. The Sutradhar of the evening was Kauri Chandna. Here are a few glimpses of the evening exclusively on the Foundation's TV and online media company, spreading inspiration through awareness. Namaste, everyone. Welcome to a beautiful evening of devotion, of Hindu identity, of Dharma and Anushasan. I would like to welcome all of you here today on behalf of Vishwa Hindu Parishad. We are going to start with the Bhavgeet first. So I would like to invite Jaya Ji, who is a Karyakarta at Vishwa Hindu Parishad of Boston, and she is also a senior member of the Bal Vihar. So please Jaya Ji, come on stage and lead the Bhavgeet for us. व्यक्ति व्यक्ति में जगाए हिंदू चेतना, व्यक्ति में जगाए हिंदू चेतना, जन मन संस्कार करे यही साधना, जन मन संस्कार करे यही साधना, साधना नित्य साधना, साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना, साधना खंड साधना, नित्य शाखा जानवे पुनीत जलधरा, नित्य शाखा जानवे पुनीत जलधरा, साधना की पुण्य भूमि शक्ति पीठिका, साधना की पुण्य भूमि शक्ति पीठिका, रजकणों में प्रकट दिव्य दीप मालिका, रजकणों में प्रकट दिव्य दीप मालिका, हो तपस्वी के समान संग साधना, हो तपस्वी के समान संग साधना, साधना नित्य साधना, साधना नित्य साधना, साधना खंड साधना, साधना खंड साधना, यम वैदिका मंत्र वृष पुराणा, इंद्रम यमं मातरिश्वा नमाहु, वेदांतिनो निर्वचनीय एकम्, यं ब्रह्म शब्देन विनिर्विशन्ति, शैवायमीशं शिवैक्यवोचन्, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति, बुद्धस्तथानं निखिलो
Jaya Ji. This is such a wonderful beginning to a beautiful evening. And to commence that, I would now like to welcome Harish Dang Ji. I think all of us in this room know him. He is a very well reputed community member, of course, and a person of supreme dedication, devotion to the community, spirituality, and a lot of vision that I think he and his wife saw 40 years ago and continued to dedicate their last 40 years towards a radio program as a community service. And that itself is an example and a source of inspiration for a lot of us in this room and beyond. He is a supporter of a lot of community events and a lot of community organizations as well. So let's welcome Harish Dang Ji. Good evening, friends. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज हिंदू अवेयरनेस यात्रा में आप सबका स्वागत करने का अवसर मिला। इस यात्रा में शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद। I am humbled by the opportunity given to me by Sanjay Kaul ji and Rajesh Bhudani ji to welcome you all for a very purposeful and enlightening evening. आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। 3 दिन पहले थे। And let me remind you that Vishwa Hindu Parishad was founded 51 years ago over the auspicious day of Janmashtami to consolidate the Hindu society and to serve and protect the Hindu Dharma. I'm sure you are all overwhelmed like I am, seeing all the dedicated people in this room. When I see around, I see, without naming everybody, I see, it's a very emotional evening for me. Maanniya Shri Ashok Singhal ji, the President of VHP Bharat, the living embodiment of Hanuman for past 75 years. Even now. Our own dear Abhaya Ashthana ji, keeping Boston active and vibrant. When I say Boston active and vibrant, I look at Garg ji and I think of all the publications he has given to the children to educate them of Dharma. Look at Sharma ji and I think of so many camps where I have been there also with my daughter, and it just so many memories come alive. The Bathak of Mahesh Mehta ji and Anjali Behan, where all Dharma meetings used to be done in his living room in Needham. So also I would like to welcome Champat Rai ji, the Secretary General of VHP, and Shri Prashant Hartalkar ji, the Central Secretary of VHP of Bharat, and so many other dignitaries over here. और बहुत ही खूबसूरती से सबका वेलकम किया आपने, थैंक यू सो मच। और अशोक जी यहाँ हैं हमारे साथ, he is the patron of VHP Bharat, and we also have Dr. Mahesh Mehta. If I can please invite him up here, both of you, for the deep prajwalan, please. Dr. Mahesh Mehta, the founding president of VHP America, and Shri Ashok Ji, the patron of VHP Bharat. Now to add some melody to this evening, we have the Little Nightingale of New England. You haven't guessed yet. Her name is Sachi Badola. Sachi, please come on stage. We can't wait to hear your voice. She is very sweet, of course, and a darling of the entire community. And she is here. She's going to sing a bhajan.
She's a student of Srimati Rao, and she's going to sing a wonderful bhajan. So actually you can go sit on that. नमस्ते, मेरा नाम है साची बडोला। आज मैं आप सब लोग के लिए एक बहुत सुंदर भजन गाऊंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम कोई मांगे कंचन सिकाया कोई मांग रहा प्रभु से माया कोई मांगे कंचन सिकाया कोई मांग रहा प्रभु से माया कोई पुण्य करे कोई दान करे कोई दान करो बखान करे जिन जिन कन्या धन को दान दियो उन और को दान दियो न दियो जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम कोई घर में बैठा नमन करे कोई हरि मंदिर में भजन करे कोई गंगा जमुना स्नान करे कोई काशी जाके ध्यान धरे जिन मात पिता की सेवा की जिन मात पिता की सेवा की उन तीर्थ स्नान कियो न कियो जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम बसे और को नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम। Absolutely beautiful. Nothing less than what we expected from you, Sachi. Very, very beautiful. God bless you. She has won a lot of awards, of course, in music, not only within the community but beyond as well. And she's one little girl who is taking our, she's a pride, I think, for the entire community. She's going way beyond. Beautiful. Next, I would like to invite Dr. Abhaya Ashthana, who is the National President of VHP of America. He is a fellow of Bell Labs, where he directs research in advanced communication and technologies. And we all know, in addition to what's written here, that he propagates the Hindu values and the Hindu culture within all generations, and we all have so much to learn from him. So please welcome Dr. Abhaya Ashthana. Gauri, namaste, and thank you very much. Okay. What I'll do is just give you a very brief introduction to what Vishwa Hindu Parishad of America does, because following me,
we have great speakers from India who are going to tell you about what VHP does in Bharat. And then, of course, Ashok Ji will tell you a lot more. So I'll just quickly give you a very brief summary. Sure. So, VHP of America has only one very, very simple mission, and that is to keep Hindus in America as Hindus. That's all that we do. And we do it in many different ways. So, and Vishnu Parishad, as somebody mentioned earlier, was founded in 1970, 45 years ago. So since the last 45 years, it's been one saga of continuous social and community service. So the vision of Vishnu Parishad of America, which is the same as the vision of Vishnu Parishad, is to create a dynamic, vibrant, united Hindu society inspired by the eternal values of Sanatan Dharma and the ideal of Vasudeva Kutumbakam, meaning the entire creation is one family. Next. So the emblem of Vishnu Parishad is Vatavriksha, and the Vatavriksha symbolizes the Hindu civilization and everything that it entails, and the roots of this civilization in our sacred Bharat Mata soil. And all these branches have emanated from that one soil. Many, many Vichardharas have emanated from that same Vatavriksha and have given shelter and have given wisdom and have given sage advice to thousands, millions of people throughout the century. So one of those branches of Vishnu Parishad is right here in the United States. So we're going to talk about that. So the mission of Vishnu Parishad is very, very simple. As I said, keeping Hindus in America as Hindus. So there are four ways in which we accomplish that. One is imparting sanskars. So imparting sanskars through balvihars, through youth camps, through youth conferences to our coming generations. So that's one important thing that we do. And we've been doing that since 1970. The first balvihar was established by Vishnu Parishad of America. The first youth camp, family camp, was established by Vishnu Parishad of America. And it's been one continuous thing since then. The second thing we do is create awareness. Create awareness about our heritage, about our civilization, about our history. That's the second thing we do. And there are many ways in which we do this, creating awareness. Hindu Awareness Yatra, which is what we are organizing today, is one of those ways of doing it. The third important thing we do is service, social service, community service in various forms. Whether it is running soup kitchens, whether it is doing blanket distribution in the middle of the winter, whether it is supporting a child in India, or whether it is through Ekal Vidyalaya, which is now an organization all in its own right. We do, the last thing is sampark, and that's an important part of our work, is to bring all the segments of the society together at different layers. So bringing the children together, bringing the mandirs together, bringing the priests together, bringing the women together through Hindu Women's Network, bringing the elderly together through the Hindu American Vanaprasthi Network, various forms, networking, okay? We've started networking the business leaders together. So, next. So these are various milestones since 1970, and these are just a partial list of things that have been done. And this is, next slide, please. Yeah, so we have like I was mentioning, various programs, okay? The Mandir Networking Program is one such thing. Hindu American Vanaprasthi Network is another one. Dharma Yatra, AHAD, youth camps, balvihars, publications of various sorts. Recently we started a coalition of Hindu youth to network all the balvihars that are running in temples and Hindu institutions throughout the country into one network. They can all have their own unique ways of doing things, but they come together as one entity, one forum, and support a child seva programs also. Next.
So we have various chapters across the country. We have over 21 chapters across the country in almost all the metropolitan areas. So I'll just conclude saying, please find out more about what Hindu Awareness of America is doing, and we need all your support and all your advice and joining you, your hearts to help us do and accomplish what we do. I would now like to invite Shri Champat Rai Bansal, who is the Secretary General VHP. He has a master's in physics and has taught the subject for 12 years. During the emergency in 1975 in Bharat, he was jailed for 19 months. Giving up his teaching profession in 1981, he became a full-time pracharak. He strongly supports the view that national cultural underpinning bedrock is as important as national politics and economics for the cause of national security, prosperity, honor, unity and territorial integrity. Please join me in welcoming Shri Champat Rai Bansal. तो कुछ प्रारंभिक बातें आपके सामने आ गई कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 51 वर्ष पूरे हो गए, 51 ईयर्स। और ये भी बात आ गया कि हिंदू समाज में अवेयरनेस चाहिए, डायनामिक चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए, यूनाइटेड चाहिए, कंसोलिडेशन, सब बातें आ गई। तो भारत में भी चाहिए और भारत के बाहर संसार में जहाँ हिंदू रहता है, इतना रहता है कि इतना रहता है, सब जगह चाहिए। अभया जी ने कहा कि अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य यहाँ का हिंदू हिंदू बनकर रहे। ये बहुत बड़ा एक खतरा 1964 के महापुरुषों को रहा होगा कि भारत की धरती से दूर पढ़ने चले गए, वहीं सेवा करेंगे, भारत में रहे 25 साल, भारत के बाहर रहेंगे 32 साल, 40 साल, सब कुछ बदल जाएगा और उनकी संतानें पैदा होंगी, वो यहीं जन्म लेंगी, यहीं के वातावरण में पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, उनके शरीर में हिंदू कैसे बना रहेगा। अच्छी बात कही कि अमेरिका के हिंदू का, विश्व हिंदू परिषद का काम है यहाँ का हिंदू हिंदू बना रहे। सब देशों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए काम का तरीका अलग अलग है, प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, अल्टीमेट गोल एक ही है। भारत की भी ऐसी अवस्था है। यहाँ का हिंदू समाज संपन्न समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। भारत में गरीबी की भरमार है, निरक्षरता बहुत है, करोड़ों घरों में निरक्षरता है। यहाँ तो आप फिर भी हिंदू इसका अर्थ समझते हैं। भारत में तो हजारों साल तक अपने को जिंदा रखने के लिए ही लड़ते रहे। 8वीं शताब्दी में प्रारंभ करें, मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ और 1947 20वीं शताब्दी तक 1200 साल हिंदुस्तान अपने को जिंदा रखने के लिए लड़ता रहा। इस इतिहास को आप सब बड़े लोग जानते हैं। तो जब जिंदा रखने के लिए ही लड़ते रहे तो बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती हैं। वो प्रायोरिटी वहाँ फिक्स हो गई और 200 साल तक यही लिखते रहे, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सर, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सर। छोटी सी भी एप्लीकेशन लिखनी है तो नीचे लिखना पड़ता था योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सर। तो स्वाभिमान समाप्त होकर नौकर बनकर रह गया हिंदू समाज।
सारी दुनिया में लोग घूमते थे। चिन्मयानंद जी महाराज जिन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना की, सारी दुनिया में घूमते थे। पूना के दादा आपटे नाम के पत्रकार सारे संसार में घूमते थे, इस अवस्था को देखते थे और सबके मन में विचार आता था ग्लोबली हिंदू कैसे इकट्ठा हो, क्या करें। और तब लगभग 1 साल तक चिंतन मनन हुआ। भारत के सैकड़ों लोगों के साथ पत्र व्यवहार हुआ। दादा आपटे नाम के पूना के पत्रकार ने 1 वर्ष तक भ्रमण करके भारत के मनीषियों से घर जाकर 1 to 1 वार्तालाप की। तब कुछ 40 to 50 ऐसे प्रमुख लोग चिन्मय मिशन में मुंबई एकत्र आए। 2 दिन तक चिंतन हुआ और फिर डिक्लेरेशन हुआ कि सारी दुनिया के हिंदुओं के लिए एक परमानेंट वर्क चाहिए और एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उन्होंने ही इसका नामकरण संस्कार पहले दिन किया, विश्व हिंदू परिषद। लंबी चिंतन धारा का ये परिणाम है, उसका ये आउटपुट है। भारत में क्या करना है? मैं सारी दुनिया के काम को छोड़ता हूं, तो आप सब के सामने भारत का चित्र है। हमारा अतीत कैसा था सब जानते हैं। 1947 में जब देश का राज्य सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, तब देश कैसा था ये भी आप सब जानते हैं। इसी दृश्य में जिंदे रहना है या पहले जैसा बनना है? सरकार की कृपा पर बनना है कि अपने पुरुषार्थ से प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर उठाना है? दूसरा मार्ग चुना गया। सारा समाज मिलकर काम करे। आज आप कल मोदी जी के भाषण सुनते हैं तो क्या कहते हैं वो? 125 करोड़, यानी प्रत्येक व्यक्ति ऊपर उठने के लिए प्रयास करे। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों ने ये बात 1964 में विचार किया था। इस बीच में किसी ने सोचा ही नहीं, सब चाहते थे सरकार की कृपा से होगा। हमने सोचा नहीं एक एक हिंदू इस काम में लगेगा। गरीबी हटेगी, जब हटेगी। पहला काम साक्षरता। इस देश में कोई व्यक्ति अपने को ये ना कहे कि मैं निरक्षर हूं। मैं केवल इतना जानता हूं, थंब इंप्रेशन, इसमें से बाहर लाना। भारत का दृश्य ऐसा है कि अपने को हिंदू कहने में लोग हिचकते थे। मैंने सुना है अपने बड़े लोगों से कि भारतवर्ष में ऐसे भी 2-4 लोग थे, हिंदू मत कहो गधा कह लो। ऐसा कहने वाले लोग भी थे, भले एक थे। और हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं ऐसा भी कहते थे। ये भाव निकलना चाहिए। इसलिए हिंदू का स्वाभिमान खड़ा। स्वाभिमानी हिंदू कहने में लज्जा अनुभव ना करे, ये काम हाथ में लिया। और इसलिए जो काम करेंगे हिंदू के नाम पर करेंगे। कॉन्फ्रेंस करेंगे, हिंदू कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौन आएगा? किसी भी जाति का, विलेज में रहता है, टाउन में रहता है, सिटी में रहता है, एजुकेशन है नहीं है, गरीब है अमीर है, किस भगवान की उपासना करता है इसका कोई विचार नहीं, बस तुम हिंदू हो। ये हिंदू का गौरव इस समाज में खड़ा करने का काम पहला हाथ में लिया।
और हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इस काम में सफल हुए। करोड़ों लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। करोड़ों लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमारा नगरों का, कस्बों का, बड़े बड़े गांव, सड़क के किनारे के गांव ऐसा जोड़ लिया जाए तो हम कुल भारत के 1 लाख स्थानों पर आज हमारी 50 साल में अप्रोच हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर एकल विद्यालय को हम छोड़ दें तो लगभग शिक्षा, आरोग्य, स्वावलंबन, इन सब में हमारे 5000 सर्विस प्रोजेक्ट्स भारत में चलते हैं। एक शब्द आपने सुना, ऑर्फन। हमारे यहाँ विचार चला भाई ऑर्फन क्या होता है, हिंदू ऑर्फन कैसे हो सकता है, यहाँ तो सब भगवान की संतान है, हमारे में भी एक परमात्मा है, आप में भी एक परमात्मा है। ये ऑर्फन शब्द हमारे यहाँ नहीं, इसलिए हम ऐसे बच्चों को अभी तक भारतवर्ष में क्रिश्चियन मिशनरीज ही ले जाते हैं। हमने सोचा हम भी शुरू करते हैं और हम 50 स्थानों पर 50 साल में सफल हो गए। क्रिश्चियन मिशनरीज का ऑर्फनेज देखेंगे तो शायद 2000 निकलेंगे, अकेले 900 तो केरल में, एक छोटे से केरल। लेकिन हम तो एकदम इतना बड़ी बात नहीं कर सकते क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हम तो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, समाज स्वयं करता है। दैवीय आपदा आ जाती है, कोई सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, समाज का भी काम है। हमारा समाज का एक बंधु दुखी है, दुख में आ गया, हम उसकी सेवा करें। आप ये सब यहाँ सेवा करते हैं, हमारी सेवा करेंगे। एक और काम, कई बार हमको लोग धमकी देते हैं, क्या करें? आपने सुना होगा कि पाकिस्तान धमकी दे देता है। हम समझते हैं क्या सेना ही लड़ेगी क्या? हम किस लिए? हमारे लोग भी कुछ कह देते, चलो भाई हम सेना के साथ। ऐसा 1995 में हो गया था, अमरनाथ की यात्रा पर मत आना, मार देंगे। मरने से तो सभी डरते। फिर हमारे यहाँ चिंतन हुआ, भाई मरने से क्या डरना, मरना तो हिंदुओं में कबड्डी का खेल है कि नहीं है? सबने कबड्डी खेली है और एक ही शब्द बोला जाता सारे हिंदुस्तान में, मर गया। हम मरेंगे, कोई मारने नहीं आया। 5000 लोग यात्रा करने जाते थे, 50,000 गए और 1996 से अब 2015 में 4 लाख लोग। एक अंग को भारत से काटने का तैयारी थी और हम कहते थे ये हमारा मुकुट है। ऐसी चुनौतियों को भी हम कभी कभी स्वीकार करते हैं और इस प्रकार हमारी कोशिश है कि जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वो हम भारत में करें, वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें आपने किताबों में पढ़ी हैं, शायद टीवी पे देखी हैं, आज हमने लाइव सुनी है आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मुझे तो कुछ बातें सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। I don't know about you, but I was getting goosebumps just listening about certain things that you talked. So thank you so much. What an honor to have you here during your tour in the US. Our next guest here is Shri Prashant Hartalkar, who is the Central Secretary of VHP of Bharat. He is responsible for international coordination of VHP. He is an electronics engineer by education, but a social engineer, pracharak, by choice since 1986. He served in Vidarbha, Maharashtra and Goa. He is the national in charge of Hindu Helpline and the India Healthline. He initiated 4 charity and orphanages for boys as well as girls, 2 in Aloka, 1 in Amravati and 1 in Nagpur. He also worked with the railway platform children, and over 1,500 of them are now reinstated in their homes and families. What a noble cause. For organizational work, he has travelled to Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh, Malaysia, Vietnam, Nepal, Mauritius, as well as Madagascar. What an honor to have you here, Shri Prashant Hartalkar ji. Please say a few words.
का आपसे निवेदन है 5 मिनट का रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। 5 मिनट में क्या बोलेंगे वो? तैयार है कि नहीं? मैंने इसको पढ़ा ही नहीं इसलिए। Against 5 minute rule. Please speak. You cannot run in 5 minutes. इस सभागार में उपस्थित अशोक जी also. इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय माता बंधु भगिनी, I will like to express my views in Hindi, so I am very sorry. Because it is very easy and I will express it. अब सब लोग यहाँ पर आए हैं, सभी बातें तो यहाँ पर बताइए। मैं सोच रहा था कि मेरे लिए क्या बचा है, सब कुछ तो हो गया है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक हिंदू इस नाते से व्यक्ति खड़ा हो और व्यक्ति खड़ा हो, ऐसा प्रयास विश्व हिंदू हो सकता है। हम उसे कहते हैं कि हर हिंदू कर्म से हिंदू बना रहे, दैट इज प्रैक्टिसिंग हिंदू बना रहे, यह विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके स्टेप बाय स्टेप हमने उसके कुछ स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग भी बनाई है। कुछ बातें आप सबके सामने आ गई है। कर्म से हिंदू बनने के लिए पहले उसे गर्व तो लगना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। वो भी सुना कि अभी व्यक्ति कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब गर्व से तो उसने कहना शुरू कर दिया और ऐसे टॉकेटिव हिंदू बहुत बढ़ गए, बोलते हैं गर्व से कौन हिंदू है, गर्व से, उन्हें भी अच्छा लगता है। मगर क्या दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर? वो गर्व से कहने लगा है तो हमारे सामने प्रश्न आता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर? ये यदि हम करते हैं तो ही वो गर्व से कह सकेगा। यदि गर्व से कुछ करेगा तो उसका करने के लिए विचार भी अच्छा चाहिए, उसका उच्चार भी अच्छा चाहिए और उसका आचरण भी अच्छा चाहिए। माने विचार, उच्चार और आचरण से वो अच्छा हिंदू बनना चाहिए। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? वह प्रयास विश्व हिंदू परिषद के बहुत अलग अलग पद्धति से हम लोग करते हैं। श्रद्धा का भाव जागरण करने से होता है, सबसे महत्वपूर्ण है सेवा का भाव जागरण करने से भी होता है। सेवा तो जोड़ती है। भगवान ने हर व्यक्ति को, सिर्फ हिंदू को नहीं, विश्व में जो व्यक्ति का इस नाते से जन्मा है उस व्यक्ति को सेवा का कुछ भावना उसको दी है, सेवा का अधिकार दिया है, सेवा की जिम्मेदारी भी दी है। ये सेवा के द्वारा भी हो सकता है। तो सेवा हमारी इटर्नल वैल्यू है। हमारे एक संत थे, संतों के जीवन से हम सीखते हैं। एक संत हमारे थे, एक वो कहीं से काशी से गंगा ले जा रहे थे तो उन्होंने एक गधे को पानी पिलाया। सबने कहा अरे इतनी बड़ी काशी की गंगा पैदल चलकर आए, एक गधे को पिला रहे हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हुआ। उन्होंने आत्मा गधे में भी देखा। यह हमारा सेवा का भाव है। तो इस सेवा के भाव से एक मिशन करके हम सेवा करते हैं। इसे कहते हैं नर सेवा, नारायण सेवा। मगर जो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज है उसका जो हमारे कुछ विरोधक लोग हैं उसका वो अलग फायदा लेने लगे। आप उसको मिशन कहते हैं, दे वांट टू डिस्टर्ब। वो क्या कहते हैं, सेवा का ही एक वार के रूप में, माने जिसे कहेंगे कि सेवा एक विपन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और इसलिए हिंदू को अलग धर्म में, ईसाई है, मुसलमान है, बनाने का प्रयास करते हैं। सेवा हमारे लिए मिशन है, मगर सेवा एक उनके लिए वार स्ट्रेटेजी, एक विपन भी है। तो हमको तो उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए जितने सारे व्यक्ति हैं तो ये सारी उनकी हिंदुत्व की ताकत उसमें लगा सकते हैं? इस विचार से हम लोगों ने दोनों भी प्रकार से उसका अंदर का मिशन का, सेवा का भाव भी जागरूक हो, और दूसरा उसमें जो एक हमारे लिए जो विपन का उपयोग कर रहे हैं उनका भी हमें जवाब उनको देना चाहिए। एक व्यक्ति सेवा करके यदि ईसाई बनता है तो क्या व्यक्ति सेवा करके फिर से हिंदू नहीं बन सकेगा? तो डेफिनेटली वो बन सकता है। एंड वी हैव प्रूव्ड इट। हमने सिद्ध करके बताया। 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू फिर से वापस आए हैं, सेवा के द्वारा आए, किसी जबरदस्ती से नहीं, कोई प्रलोभन से नहीं, कुछ नहीं। हम आपको ये देंगे, बिल्कुल नहीं। अरे भाई आप हिंदू हो, हम हिंदू है, हम सब एक ही है, वो वापस आ गए। तो ये विश्व हिंदू परिषद की तो ऐसे अनेक सक्सेस स्टोरीज है। तो इसके लिए हम लोग सेवा करते हैं। इसलिए सेवा प्रमुखता हम 4 बिंदु से करते हैं। बातों में आ गया है, शायद ये रिपीटेशन भी होगा, आई एम वेरी सॉरी। तो उसके सिवा मैं आगे नहीं जा सकता। इसीलिए तो एक पहली बात है कि हम लोग स्वयं पूर्णता के लिए सेवा करते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं बनेगा तो अधूरापन महसूस करेगा। ये स्वयं पूर्णता उसकी किस में आनी चाहिए? तो शिक्षा में और स्वास्थ्य में। दैट इज द बेसिक थिंग। नाउ एजुकेशन इज अ मिसाइल। भाई शिक्षा तो मिसाइल है। और आज भी टुडे आप न्यूज देखिए, आज का एक रेशो आया है 100 में से 18% लोग इलिटरेसी भारत में है।
तो हमें दूर करनी पड़ेगी। वो न्यूज सुनते ही हमें तो बहुत, मैं जब से न्यूज मैंने पढ़ी वेबसाइट पर तब से मैं भी हिल गया हूँ। ऐसे लगता है कि अरे हम इतना काम कर रहे हैं और कितने काम की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट नहीं है। 18 लोग आज 100 में से लिटरेट नहीं है। इसलिए हमने शिक्षा के अलग अलग उपाय, उसमें के एकल विद्यालय का आप सब लोगों ने हमने सुना। तो ऐसे ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में हम शिक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसका प्रयास आज हमारा चल रहा है। गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल शुरू करो, गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन लाने का प्रयास करो, स्कूल चालू करो, शिक्षा में संस्कार भी आता है, संस्कार वर्ग का प्रारंभ करो। ऐसे कई मात्रा में आज हम लोगों का काम है। स्वास्थ्य से व्यक्ति अच्छा बनना चाहिए। और आजकल तो भारत में स्वास्थ्य की सेवा इतनी बिगड़ गई है कि ऐसे लगता है, पहले वो कहा जाता था कि कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में किसी अच्छे व्यक्ति ने नहीं जाना चाहिए, अब तीसरा आ गया, अब दवाखाने में भी नहीं जाना चाहिए, तो पूरा लूट लिया जाता है वहां। तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा उसका एक प्रयास, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हमने 12 स्टूडेंट्स को लेकर शुरू किया हॉस्टल। जो होगा सो होगा, बहुत तकलीफ होती है, हर महीने में फ्लैट बदलना पड़ता है, मगर हमने शुरू किया। कहीं तो भी परिणाम हमको निश्चित रूप से दिखेगा। ऐसे देश में और देश के बाहर हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट बिल्कुल आधे मिनट में समाप्त करूंगा, और वो है आपसे प्रार्थना है मेरी, भारत का अच्छा ब्रेन, इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर आकर बसे हैं। ये शक्ति का उपयोग सारे विश्व के हिंदू को हो रहा है क्या? मेरे मन में बहुत बार प्रश्न आता है। 6% लोगों के पास में 94% हिंदुओं को देने के लिए सब कुछ है। क्या देने के लिए आपका मन है? इस मन की तैयारी आप कर सकते हैं? भगवान ने आपको दिया, बहुत दिया है, और भगवान देगा। आपको आपका मन बनाने की आवश्यकता है, आपको आपका समय देने की आवश्यकता है, आपको आपकी बुद्धि देने की आवश्यकता है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए। सिर्फ अमेरिका मत देखो, अमेरिका के बाहर भी जाकर देखो। यह आज विश्व की आवश्यकता है। मैं इसी प्रार्थना के साथ मेरे वाणी में को विराम देता हूं। नमस्कार। I'm going to go a little bit out of the script here, because one thing I'm feeling when I'm watching everybody talk here is the effectiveness of the speech, the effectiveness of the public speaking. I think उसकी roots भी शायद हमारी हिंदुइज्म में ही हैं, क्योंकि दिल से आवाज निकलती है, तो it's so effective and so emphatic. I think each one of us in this room is affected by it, so beautifully. And I think one common thread that we are seeing in all of the speeches is Swabhiman, self-confidence, and the pride of, feeling the pride of being a Hindu is very important. And I think the manifestation of that is, I think, best done by the young generation when they come up and they sing bhajans. So I'm now going to invite our a very talented young singer, Amritha Pai. Please welcome Amritha. She is a student of Srimati Aparna Tyagarajan, and she will sing a bhajan. भक्त जनवत्सले ओ विठ्ठले भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले करुणा कलोले करुणा कलोले पांडुरंगे 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 भक्त जनवत्सले हे ओ विठ्ठले भक्त जनवत्सले सजल जलधर गण पीतांबर परिधान
सजल जलद गण पीतांबर परिधान सजल जलद गण पीतांबर परिधान येहि उधरणे येहि उधरणे येहि उधरणे येहि उधरणे केशिराजे 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 भक्त जनवत्सले ओ विठ्ठले भक्त जनवत्सले नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी नामा म्हणे तू विश्वाची जननी क्षीराब्धिनिवासिनी जगदंबे क्षीराब्धिनिवासिनी जगदंबे भक्त जनवत्सले हे ओ विठ्ठले भक्त जनवत्सले पांडुरंगे 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 भक्त जनवत्सले ओ विठ्ठले भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले विठ्ठले विठ्ठले Beautifully sung, beautiful. And I should add, she has won a lot of awards. Very nice, very nice. I would now like to invite Smt Ranjani Saigal on stage. As you all know, she is the Executive Director of Ekal Vidyalaya Foundation of America. But that is not the only thing she does. She's omnipresent. She does so many different things. Huge inspiration for all of us, for me personally as well. She's a community organizer, to say the least, and a writer as well as publisher of a very popular electronic magazine, Lokvani. And she's a beautiful dancer and a very accomplished teacher. A mother of two, and she was formerly at MIT. So please welcome Ranjani Saigal here to say a few words. Namaskar. Such an honor and a pleasure to be here today. In this Divya Sabha, I should say, when Abhaya Ji requested that I take on this onerous task of introducing this divine personality, Mananiya Ashok Singhal Ji, to the satsang, I was wondering, how did I get that honor? And then I realized, kabhi kabhi Bhagwan ko bhi bhakton se kaam pade. So even I got this great honor to introduce this amazing Divya Tejas person who has often been described as an incarnation of Shri Hanumanji. He's certainly Sankatamurti, absolutely. I am a beneficiary of his vision because I now have the unique opportunity to work as the Executive Director for Ekal Vidyalaya Foundation of USA, and I have first-hand experience of going into the villages and seeing how we can empower these wonderful, talented men and women who live in these villages. And I have to say that I was
about Ashok Ji, everybody knows who he is, what he has done. But what I learned was that he is actually a metallurgical engineer from the Banaras Hindu University. And while other metallurgical engineers might take on the challenge of discovering new elements and putting them together in composite forms so that they become stronger, he decided, let's leave the metals aside and let us go to the people and see how we can knit them together so that the Indian society is powerful and it can fly as high as it can. And that is, I think, the most challenging task, and I think the greatest metallurgical engineer that India has produced or the world has produced. What do you think? Again, this is just phenomenal to hear about the talks about the Dalits. And again, many people talk about things, but to see in action what he did. Somebody said I'm a dancer, and I'm a big fan of Lord Nataraja. And we all know about Nandanar, the great devotee of Lord Nataraja, who said, that is, I was born as a Pulayan, and I didn't do any punya because I could not go into the temple. And I think Lord Shiva heard, and he sent Ashok Ji to the world. And so we now have Dalit temples, Dalit only temples, 200 of them, where Nandanar today can happily, jollily just go in. So I think Lord Shiva heard his prayer and sent Mananiya Ashok Ji to the world. I have to say that this idea that you cannot go to a temple or to access a temple was something I understood only after I went to Aikal villages. When there is no temple, imagine if we did not have this temple for us, a place when we are lacking hope, we can go and pray. That is the biggest need that anybody has. And you need a sant in the community. And what the Aikal movement has done is created young women as kathakars, as saints. And I met a 16-year-old Dalit woman who sat on the Vyasapit and could do Bhagavad Katha and inspire the rest of the world. And that inspiration also comes from this divine personality sitting here, Mananiya Ashok Singhal Ji. So yes, I think that was, you deserves a huge applause because it was a moment for me. And finally, Ashok Ji, आपका परिचय करना, तो it was unnecessary to them. But I want to give a little bit परिचय of our audience to you when you mentioned, sir, that what is this community, the Boston community, doing, the intellectual community. So today, thanks to many members of the Boston community, which is very actively involved in Aikal, today, Aikal Vidyalaya is rolling out its first mobile computer lab, Aikal on Wheels, that has taken off today with your auspicious blessing here. And I have to tell you, that was specced out. Mukesh Dalalji is in the audience here today. And it's really with some of the best technologies. And what you were saying, sir, you said there is 18% illiteracy. I think with technology, we can speed up this reading, writing, arithmetic, and everything else we are doing. We are hoping, with the blessings of the great Lord Nataraja and with Ashok Ji's Ashirvad, that whatever thoughts we have can actually impact India. And so we are so honored by that. And so that's it. I am not going to say anything more about Ashok Ji because there is nothing that needs to be said. But I think his mother certainly named him right. Ashok is that tree under which Sita, she who was suffering, was sitting. And she was safe there because the Ashoka tree was there. And the world at large is safe because Shri Ashok Singhal Ji is here. So all Sitas who are suffering can certainly be aware that there is hope in the world. I wanted to say one more thing, sir. In this temple, we have children who are, there's a 10-year-old boy who has put change for change, which is a dabba where he has asked for everybody to put their change because it costs only $1 a day to bring education to Aikal. So that is sitting right here in the very temple where Ashok Ji, you are speaking. So if anybody has change, please put it in here because then at least Bhai Sahab here will know that we are doing something for the Indians of the world. Thank you. And now over to you, Ashok Ji.